watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Today was a day when the Agadi government in Maharashtra laid to rest any doubt, especially the Shiv Sena laid to rest any doubt about why action was taken against Kangana Ranaut. Today, the mouthpiece of the ruling party, the Shiv Sena, proudly declared on its front page, Ukhad Diya. This headline should be seen by everyone in Maharashtra and in India, because this is the mouthpiece of a party in power, perhaps sending out the most unsubtle of all warnings to all dissenters. This is what will happen to you when you dare to take on the powers that be. The funny thing is that this warning or threat or declaration, call it what you will, was made by the mouthpiece, and I keep saying this again and again at the risk of sounding repetitive, it's the mouthpiece of the ruling party. Even as the chief spokesperson of that same party said and wanted us to actually believe that the BMC works independently, that the Shiv Sena has nothing to do with what the BMC does. Listen. सर, कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा, इस पर देखिए, हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। Well, of course we believe Mr. Sanjay Raut. BMC is absolutely not under any influence. They are not being guided by the Shiv Sena. We've already told you the numerous ways in which rules were flouted in taking action against Kangana. Now let me tell you the contrast. On September 7, notices were issued to Kangana Ranaut, but other than her, notices were given to other people as well for illegal construction. One of these notices was given to a designer whose office is right next door to Kangana's. But Kangana saw action within 24 hours. The designer was given time to respond of a week. 24 hours for Kangana, 1 week for somebody whose office is right next door. Has got multiple violations according to the BMC. Why? Isn't it absolutely clear now? The state is mighty, and when you dare to stand up against it, when you take it on, when you make the Sarkar angry, rules will be thrown in the dustbin and you will be made to bite the dust. Isn't that message loud and clear? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Okay, so joining me on the News Hour Agenda, we have Amit Malviya, spokesperson of the BJP, Kangana's lawyer Rizwan Siddiqui, film producer Akashdeep Sabir, supporters of the Shiv Sena, Vikram Singh Yadav, Sanjay Gupta, and political analyst Tanvi Pruthi. I want to start by asking you, Tanvi Pruthi, you're a lady yourself. If you were to wake up in the morning and read in the paper, Ukhad Liya, would you feel safe? Would you feel happy? Would you feel, oh, this is good? This is democracy. This is the way a government functions. That the same party is in government and the same party's mouthpiece triumphantly tells you, Ukhad Diya. Tanvi Pruthi. What do you want me to say? I don't want you to say anything, ma'am. I just want to gauge your feelings. While we fix that audio, let me gauge Mr. Vikram Singh Yadav's feelings. Vikram Singh जी, अगर सुबह पेपर में आपको दिखता है उखाड़ दिया, क्या उखाड़ दिया? क्या लगता है आपको, क्या उखाड़ दिया? देखिए, ये देखिए मराठी पेपर में आप देख रहे होंगे, हटाने को जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, मराठी का ये मीनिंग है उखाड़ना। उखाड़ और दिया दोनों हिंदी के शब्द हैं। उसको हटा दिया। उखाड़ और दिया दोनों हिंदी के शब्द हैं। अगर आपको लगता है कि ये मराठी है तो उखाड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई कांट बिलीव वी आर हैविंग सच अ फेसिशियस डिबेट, बट अगर आपको ये सब चीजें बोलनी है तो बताइए भाई, अगर उखाड़ दिया मराठी है तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? और इसका मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि हमने रूल ऑफ लॉ फॉलो किया। यही है कि जो भी इलीगल
नहीं, इसका मतलब यही है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी या जो भी एक अवैध निर्माण था उसको हटा दिया, क्योंकि पहले भी नोटिस दिया था 2018 में नोटिस दिया था, उस टाइम उन्होंने उसमें सुधार वो नहीं आपकी किया। आर्ग्यूमेंट गलत तो है, जो पुरानी सर वो कब 24 घंटे पुराने आर्ग्यूमेंट आप 24 घंटे बाद के डिबेट में दे रहे हो, ये तो थोड़ा लेजी हो गया ना, नई चीज पढ़ के आते हैं आप। अब 24 घंटे ये डिबेट हो चुका है, डिबंक हो चुका है, फिर 24 घंटे बाद आके आप वही चीजें दोबारा बोलते हो। दिस इज नथिंग मोर देन समबडी क्रोइंग। देखिए ये तो इट्स लाइक सेइंग तुम बहुत उछल रही थी, हमने उखाड़ दिया। दिस इज व्हाट इट इज। नहीं, देखिए इस गलत चीज का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई भी बॉलीवुड से देख लो कि अगर किसी ने भी कुछ बोला हो, भाई गलत है, जो चीज इलीगल है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि सबको इस चीज के लिए बोलना चाहिए कि हाँ, जो भी अगर इस तरीके का किसी ने गलत इलीगल निर्माण किया है उसको इलीगल निर्माण हटाने के लिए, एक सेकंड, इलीगल निर्माण हटाने के लिए पहली बात प्रोसेस क्या होती है? चलिए आप शिवसेना के समर्थन में आते हैं ना टीवी पे, प्रोसेस की बात करते हैं, क्या प्रोसेस होती है? नहीं, देखिए सबसे पहले नोटिस ही होता है, नोटिस दिया गया था। और अगर उनको कब नोटिस दिया जाता है? नोटिस के बाद कितना वक्त दिया जाता है? नोटिस के बाद कितना वक्त दिया जाता है? 2018 में नोटिस के बाद कितना वक्त दिया जाता है सर? नहीं, 2018 में भी 2018 में इस प्रॉपर्टी को नोटिस नहीं दिया गया था। ये बात ऑलरेडी डिबंक हो चुकी है। अब आप 2018 करते रहेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए डिबेट में कोई नए फैक्ट्स लेके आइए। 2018 में जिस प्रॉपर्टी को नोटिस दिया गया था वो अलग प्रॉपर्टी थी। चलिए, आई थिंक यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिबेट। लेट मी ब्रिंग इन तन्वी पृथ्वी। तन्वी पृथ्वी, आई वांट टू फोकस अगेन। व्हाट इज दिस मैसेज? इज दिस अ मैसेज? इज दिस अ वार्निंग? इज दिस अ स्टेटमेंट? What is it? What is उखाड़ दिया? It is a news article as far as I know, Padmaja. But you know what? I'm willing to condemn today Maharashtra government. Okay, I am willing to condemn. As far as Yogi Adityanath ji is condemned for Dr. Kafil Khan, Amit Shah ji is condemned for cancelling Atish Sasi's OCI status, and Gujarat government is condemned for Sanjeev Bhatt. Is this happening for the first time? I want to ask Mr. Amit Malviya ji, he is sitting over here. Okay, Amit Malviya. चलो, we will not talk about उखाड़ दिया, we will talk about Dr. Kafil Khan. All right, answer, Dr. Amit Malviya. Fine. Well, Padmaja, I think this is a settled debate. Anybody who has seen the developments of the last 24 hours and perhaps a few more days before that would know that the Shiv Sena-led Aghadi has done this out of vindictiveness. They were stung by a woman who had a mind of her own and is not afraid to speak. The Shiv Sena, which has been governing the BMC for the longest time, have their mayor. Yesterday I saw their leaders who invariably are not camera shy. Sanjay Raut, who hops from one studio and one camera to another, said that he has no idea. The mayor would answer, the BMC would answer. कहाँ चली गई इनकी हेकड़ी? No. And the mayor, even though Sanjay Raut says that the Shiv Sena has got nothing to do with the action against Kangana, the mayor herself participated in a protest in Mumbai against Kangana. The lady was there. Kishori Pednekar was in a protest against Kangana Ranaut. Where is the doubt in anyone's mind, Sanjay Gupta? Where is the doubt? Sanjay Gupta. और पहले आपने जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, जो बहुत ज्यादा चहक रहे थे, उनको आपने चुप करा दिया, क्योंकि आपने उनका घर उखाड़ दिया। ये एक जिसको कहते हैं ना विक्ट्री क्राई, दिस इज अ वॉर क्राई। बेसिकली यू आर सेइंग दिखा दिया तुम्हें, धूल चटा दी। नहीं, देखिए मैं बता ये क्या है? ये सरकारें ऐसी बात करती हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसी बात करती हैं। ये तो पान की दुकान पे जो लोग लड़ते हैं वो बोलते हैं क्या कर लेगा, देखा उखाड़ लिया। संजय गुप्ता जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि एक ट्वीट जो है कपिल शर्मा जी ने भी किया था। कपिल शर्मा जी ने ट्वीट किया था, क्या यही अच्छा नहीं है पीएम साहब को? पहले आप इसके बारे में बताइए ना, आप मेरे को बताइए कि इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ये जो उखाड़ लिया लिखा गया है, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। देखिए, फीलिंग की बात बताता हूँ, बताइए। देखिए, बहुत सी पत्रकारिता की दुनिया में आप भी बहुत सी चीज़ें लिखती हैं कि ऐसे तो ठीक इसने से उखाड़ दिया, जो लिखा गया इसलिए लिखा गया क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था। जिसमें कहा था कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है और मेरा जो कोई उखाड़ सकता है कोई उखाड़ ले।
मतलब इस तरह का ट्वीट तो किया ये था जवाब उन्होंने, है, और हो सकता है ये इसी के उसका संरक्षण जवाब में- है। सो यू आर एडमिटिंग ये कुछ उसका ऐसा जवाब था। है कि उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई उखाड़ ले सकता है उखाड़ ले, उन्होंने कहा था कि कोई क्या बिगाड़ सकता है बिगाड़ दे। आपने कहा दिखा दिया, यही है ना। सो द स्टेट इज गोइंग अप अगेंस्ट अ सिटीजन एंड सेइंग नहीं, दिखा दिया तुम्हें, लेसन सिखा दिया। और बाकी मेरी तुम बात लोग जो सुनिए, सब आप- देख रहे हो, मैं एक बात देखो कहना हमने चाहूंगा क्या कि किया। एक बयान उन्होंने दिया We are the कि मुंबई government. को कंपैरिजन किया। We are the state. नहीं, एक मिनट पद्मा जी, So not only Rizwan Siddiqui is this a misuse of state machinery, एक मिनट रुकिए आप। it's a statement. It is a statement and a reiteration of how we will misuse, we will silence, and then we will gloat about it. Rizwan Siddiqui. See, first and मतलब foremost, किसी if I just इलीगल take वोलेशन you को to the हटाने से timeline, क्या मतलब संविधान खत्म हो जाता है? एक सेकंड संजय जी, आप रिजवान सिद्दीकी को बोलने दीजिए। रिजवान सिद्दीकी, यस। मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ ताकि इट बिकम्स इजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पहली दफा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग मेरे क्लाइंट के घर पे गए तो मेरी क्लाइंट बॉम्बे में ही नहीं थी, पिछले 6 महीने से वो अपने होम टाउन में है, मनाली में है, जो सबको पता है। और ये भी पता है कि वो वहीं से ट्वीट कर रही थी और वहीं से उनके जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो बॉम्बे से नहीं हो रहे। बाद में क्या हुआ कि इत्तेफाक से क्या हो गया है कि सैटरडे के दिन उनके घर में लोग घुसे, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके। सिद्दीकी साहब, वोलेशंस को हटाने के लिए तो वैसे नोटिस की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको एज पर लॉ बता रहा हूँ। सेक्शन को हटाने के लिए नोटिस की जरूरत होती है। मैं आपको पहले लॉ बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मुंह ज़बानी मालूम है, पर मैं आपसे बहस नहीं करना चाहूंगा बिकॉज आप वकील नहीं है। तो मैं आपको आम आदमी के शब्द में समझाता हूँ। आप किसी के घर में पुलिस ऑफिसर भी है ना, तो विदाउट सर्च वारंट के जो कोर्ट देता है घुस नहीं सकते। ओके, म्यूनिसिपल कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी के भी बेडरूम में घुस जाए, किसी की। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल वोलेशन है, उसके लिए भले पुलिस, जिसके साथ पुलिस होती है, उसमें घर में आदमी हो या ना हो, एज पर लॉ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके ताले को भी तोड़ सकती है, उसको सामान को भी तोड़, उसकी वोलेशन को भी तोड़ सकती है एज पर लॉ। कौन सा सेक्शन? ये जरूरी नहीं है कि वहाँ हो कोई या नहीं हो, एज पर लॉ। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन बताइए ना। ये आपको सेक्शन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। This is section 1A of Sanjay Penal Code. Rizwan Siddiqui, please, why are you arguing with Mr. Sanjay Gupta? You cannot. Have you read the Sanjay Penal Code? What do you know? You're only a lawyer. हाँ, तो गुप्ता जी सुनिए मेरी बात। हम लोग बहस नहीं करेंगे बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा मैं किसी एक नॉन वकील के साथ में लॉ पॉइंट्स पे बहस करूं। On a more serious note, Rizwan Siddiqui, because everyone keeps saying this again and again, I want to ask you, after the notice is given, is the municipal corporation supposed to give you any time? Are they bound to? सेक्शन भी बता देता हूँ। Are they supposed to follow a process? If it's illegal, they can just come and demolish it, right? No, there is a Supreme Court order against the Bombay Municipal Corporation itself, where Bombay Municipal Corporation is a party to the Supreme Court judgment in 2019, much before Corona happened, where the Supreme Court has very clearly said that after the 24-hour notice, you're supposed to give a 7-day notice. Forget that. Bombay High Court, 4 senior judges of Bombay High Court have clearly mentioned in their own writ petition, taken out by them, writ petition number 2 of 2020, that all interim orders which have been passed for demolition have to be stayed, and this stay order continued to change. Right now the stay has been extended to 30th And it's September interesting you mentioned that 7 days period to answer to that notice, because that same courtesy was extended. That courtesy was extended to a designer who's right next door to Kangana Ranaut. जो कंगना रनौत का ऑफिस है संजय गुप्ता जी, उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया। बगल में डिजाइनर का ऑफिस है, उनको 7 दिन का वक्त दिया गया। क्यों कंगना क्या इंडियन सिटीजन नहीं है? कंगना के ऊपर सेम लॉ अप्लाई नहीं होती है। कंगना के ऊपर बुलडोजर 7 दिन क्या 7 घंटे बाद चला दो, आप 24 घंटे में चला दो। बिटवीन द इलीगल वोलेशन एंड कंस्ट्रक्शन। नहीं, मैं इसमें एक चीज बताता हूँ। चलिए मैं आपको 2-4 पॉइंट्स और बताता हूँ, फिर आप उस पर बहस कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने उनके नोटिस का जवाब दे दिया 24 घंटे के अंदर, तो उनका फर्ज बनता है कि मेरे वो नोटिस को रिजेक्ट करें और उसके बाद में 7 दिन मुझे दे। सुप्रीम कोर्ट बताता है और सुप्रीम कोर्ट का उनको पालन करना है। खैर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है।
And Molestation just a second, you know, removal since you के लिए speak guidelines about नहीं this, what you may not have noticed, Rizwan Siddiqui, and I really have some big news to break right now, so I want to move on from this. Let me tell you, Rizwan Siddiqui, you say that you replied to the notice that was given to you. However, Samna today in its mouthpiece, the Shiv Sena in its mouthpiece today says that there was a notice issued to her. She did not reply to it, which is why subsequently action was taken against her. And for everyone who is sitting over here and being holier than thou and saying that, you know, this was an illegality and action needs to be taken, now I want all of you, starting with you, and I will say this in Hindi, Vikram Singh Yadav ji, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि अरे इलीगल था तो उसको तोड़ना था, इलीगल था उसको तोड़ना था, इतना इलीगल था, इतना आंखों में चुभ रहा था कि 24 घंटे में तोड़ना था. मेरे हाथ में ये दो नोटिसेस हैं. I have two notices in my hand, and that's the story we are breaking right now on the News Hour agenda. These notices were issued to shakhas of the Shiv Sena for illegal construction. ये शिव सेना की शाखा जिनको 7 जनवरी 2019 में नोटिस गया था कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, विक्रम सिंह यादव. दूसरी शाखा जिसको नोटिस गया था 9 मई 2018, 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले यह नोटिस गया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है. इन शाखाओं को कब गिराएंगे? कब गिराएंगे यादव जी? इनको उखाड़ कब देंगे? इनको नहीं उखाड़ दिया? देखिए मैं ये 2 साल से, मैं 2 साल से इनको क्यों नहीं उखाड़ दिया? पा रहा हूं. देख मैं उसी चीज पे आ रहा हूं. देखिए कभी भी बीएमसी के पास कोई कंप्लेंट आती है, बीएमसी अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करती है. और इसमें तो ज्यादा अच्छे तरीके से तो बीएमसी बता पाएगी कि ये बीएमसी का है, इसको आप सरकार से मत जोड़िए. अगर बीएमसी इसके लिए जो है ना बीएमसी सही ढंग से बता पाएगी. नो, ही इज एब्सोल्युटली राइट. बीएमसी अपने हिसाब से करती है. ही इज स्टेटिंग द एक्चुअल ट्रूथ. सरकार से आप बीएमसी अपने हिसाब से करती है. He is actually stating facts. Rizwan Siddiqui, you are just, you know, getting involved in things like law. He is stating the fact, right? That is the fact. नहीं आप इस बोलिए. आप इस चीज पे सवाल उठा रही कि कंगना पे क्यों? तो मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी मैं इस चीज पे सवाल नहीं उठा रही हूँ. मैं इस चीज पे सवाल उठा रही हूँ कि शिवसेना की शाखा के ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चला? 2 साल से इस इलीगल शाखा पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? हम भी सवाल उठा रहे हैं. आप बताइए तन्वी पृथ्वी, इस शाखा पे 2 साल से बुलडोजर क्यों नहीं चला? हम भी इट्स बीन ओवर 2 years. इस पे बुलडोजर कब चलेगा? इसको कब उखाड़ा जाएगा? I'm sure that there are many buildings under process and that will happen, and we know the track record of BMC, so that is not the point over here. Why is that not the point? Even getting into the legality of No, why is that not the point? Why is that not the point? Right now, everyone was harping about the illegality. Now I want to know, why is this illegality less than the illegality of what Kangana did? Let me tell you one thing. This matter has nothing to do with legality or illegality. This matter is a political tug of war between BJP and Mahavikas Aghadi. And this is like a shrewd attempt to bring Mahavikas Aghadi down. Great. And So now we are accepting that. Akashdeep Sehgal, we are accepting that. This is basically just a political fight. Of course it is. And it is from the both sides. All right. On whose behest Kangana is acting. Will you finish? Akashdeep Sehgal. I agree with you. I must tell Kangana, welcome to the world of politics, because this is exactly like she's become a pawn in the hands of opposition parties, ruling parties and whatnot. And I must take this beyond this current point and say... Take it beyond anything. I am asking a simple question. See, let's not get into the vague, you know, area of, oh, this is a political fight. Who is behind Kangana? I don't know. I don't know. But what I do know is that the BMC is run by the Shiv Sena. Amit Malviya. So it is now being said, this is a basic tit for tat. You backed Kangana. You gave Y+ category security. Hence, Shiv Sena is using the BMC. No. That's not the point. The same BMC broke Kapil's house. The same RACs were cut in the middle of the night. The governor met at 4 and 5 Minister of Himachal Pradesh asked for one. Excuse me, sir. And he perhaps recommended that she be given a security because the member of parliament of Shiv Sena, an MLA of the Shiv Sena, openly threatened to assault her when she arrives in Mumbai. Can I finish? Clearly, Shiv Sena is the party of ruffians.
They Padmaja, have please not give me 30 seconds to answer to that. to govern. Padmaji, They are Padmaja. known for their street politics. They were fine Padmaja, as long please as give they me were in 30 alliance. seconds to with us. answer We Mr. kept them in Amit check. Sir, Now they are unbrindled. Padmaja. Uddhav Thackeray clearly does not know how to control Mr. his men and Malviya, he doesn't know how you're to talking behave about when in why power. security given to Kangana important Ranaut thing on the is ground of threat. that Please can Uddhav answer. Thackeray come Our out and Kashmiri say sarpanches are that dying every Bhattacharya year has crying no for security. illegal Why was construction. not security given to He our should Kashmiri make it sarpanches? unequal. Because Kangana Ranaut is helping And you if in there Bihar is politics. any Because illegal Kangana Ranaut construction is in helping you to Mathochari, bring even a Maharashtra check Ghadi government should down. be And so demolished. you give us why plus Can the security? Shiv Sena do it? Can Uddhav Thackeray do it? That's the question. The point is that you giving why security to Kangana Ranaut on threat of I don't know what, and not giving to our Kashmiri sarpanches who are dying every year because by the terrorists, that shows that what kind of political games you are playing through, Kangana. Actually, central And I'm security sorry, is being please- given to sarpanches. It was in the newspaper 2 weeks ago. But anyway, Please, Amit Malviya, go on. No, please. Padmaja, Take the last you know, Kashmiri Pandit if- that died. If people are ill prepared, they masquerade as analysts and are not up to facts, then I don't want to comment on it, but Oh, let the please. viewers decide. Please. But having said that, Malviya the ji, issue and, here Padmaja, you're is wrong about over here. Kangana Please take Ranaut. in news. A The Congress issue is about sarpanch died how and he was Shiv crying Sena for has the security misused from the December state machinery 2019. to target Yes, a after woman Ajay Pandita's because she has an death, opinion. don't just call him a Kashmiri Pandit Sarpanch. He has a name. His name is Ajay Pandita. I am not wrong. And it's 2 weeks after that, the center said, yes, we will give central security to all the sarpanches. Yes, and So yes, that was ma'am, I know my yes, that facts. was after But you, that. if you're going to bring up that argument, I suggest you also bring more facts. That being said, I still want to ask, you know, we can either indulge in whataboutery or Tanvi Pruthi, you will answer me a simple question. When will these shakhas be demolished? I just have a simple question. I say on principle, illegality should be punished. When will these shakhas be demolished? I have the address of these shakhas. One is at Dashrath Lal Joshi Road, Ville Parle West. Notice issued 7th January 2019. The second is near Durvankur CHS, DN Nagar, Andheri West. Notice issued 9th May 2018. Just in case it slipped the mind of Mr. Sanjay Raut, now he has the address and he has the date. Now I want to know, kab ukhad liya? Tanvi Pruthi. उखाड़ लेंगे पद्मजा, वो भी उखाड़ लेंगे. Don't worry about it. Ah. Please tell me when are you No going to urgency have here. access to Mr. Amit Malviya No and urgency Dr. here. Kafil Khan? Because When are you going to Kangana have Ranaut, access to him Kangana on Ranaut's Sandeep Bhatt? 14 On violations cancelling were OCI the status. most pressing On issue in cancelling Mumbai OCI yesterday. status. Amit Kangana Malviya. Ranaut is not a Amit victim. Malviya, they'll first deal with Kangana, then they will get around to the illegal shakhas and the 45,000 other illegal constructions in Mumbai. You know, if the BMC was that efficient, Mumbai would not have had pothole-ridden roads. Every monsoon, the city is in flood. This is the track record of BMC and its efficiency. So clearly, Sanjay Raut either doesn't know how efficient BMC is, or perhaps he doesn't know that Shiv Sena runs it. I think he must go and have a chat with Uddhav Thackeray and tell him that he's got his head in the barn in this one. And it's embarrassing. Akashdeep Sabir. Mumbai has seen how Shiv Sena has made a fool of themselves, and they know that this is a party that does not deserve to govern. They should not be in power at all. They are a bunch of ruffians who don't know how to handle power. They don't know how to govern, and they have come to power through the back door, and it is now showing. And Akashdeep Sabir, this is like a street fight. We heard the abuse earlier, and now this ukhad liya. It pretty much shows at what level this fight will be fought. I wonder how people are still asking, why is security given? If people are willing to call somebody haram khor, now they are willing to gloat ukhad liya. Are you in any doubt that tomorrow there could be someone who would physically attack? Earlier, even I thought that Y plus security was a bit of an overreaction. But now when I see the level at which this fight is being fought, do you think that a physical attack is an impossibility? Akashdeep Sabir? I hope something like that doesn't happen. But I want to tell Amit, you are sounding as if you don't know that there is another side to politics, Amit.
Do you know what happened to Kapil Sharma? You know what happened to Mannath? You know what happened to Shatrughan Sinha's illegal construction? You know how the RA trees vanished at 3 in the morning? You know how the governor kept a meeting at 4 in the morning to try and create a coalition between Mr. Ajit Pawar and Mr. Fadnavis? Can we talk about Everything the issue at happened hand, in sir? Or politics. are we now going to talk about coalition politics? We'll talk about Manipur. We'll talk about Goa. Can we stick to the topic at hand? How can you take a government action? Because you started the debate by saying, you had this very, all illegality must be addressed. Illegal constructions, we must bring them down. Now I'm doing an apples and apples comparison, and suddenly you want to talk about coalition politics. Why? There is a reason why this happened. Why, There is bhai? a reason why, Padmaja, there is a reason why this happened. I'm sure you know where it all started from. It started from her interview on Sushant Singh Rajput. I hope you realize the last Are you picture. comparing, Yeah, prime Mr. time is not Sabir, dedicated are to you demolition. comparing a private citizen to the state? And you are saying this is a fight among equals. When it is a war between When the state and says, private a citizen says, I disagree with the state, ended up as and a war the between state a turns state around and a and says, private citizen. ukhad diya, you are saying this is a fight among equals? No, it is a fight between the state and an individual. I agree with you, but that's how it's led. Even after the first set of words, where Kangana obviously did not mean it, but used those words of POK and Taliban, even after that, in the next week came the other things about Babar and Bollywood Mafia broke my house. Rizwan Can you Siddiqui. please tell me any proof? Yes. How Rizwan Bollywood Siddiqui, Mafia so we are broke my house? actually being told this is just the state There getting are back. proofs. No, there are We proofs sit on going TV now on. and we say, No, if please you're going to justify anger what the you said. state, are you seriously thinking there won't be repercussions? Of course there'll be repercussions. You should be ready for them. That happens everywhere. Welcome to politics. It's not that we like it. Okay, It's not that then we let's like it. just get ready to I live with agree it. with you. Sir, you Listen, may be I agree comfortable with with you. the idea. I'm not comfortable with the people idea have that tomorrow, seen this from when you time speak up, immemorial. your house will be brought down. The party mouthpiece will say, अब हम खार में भी जो घर है उसके खिलाफ भी action लेंगे. And we should say, this is the real world. Welcome to politics. जिसका घर टूटता है, they are not so realistic and pragmatic, sir. Rizwan Siddiqui. Unfortunately, this is the real. I'll tell you Unfortunately, what, welcome this to is politics. basically, if you look at it, this is an attack on the constitution, this is an attack on fundamental rights. Rizwan, my friend, will you give me 10 seconds? Rizwan, Sure. आपकी client, जिसकी body of words and her guts to come out and ask for a fair justice, we respect. Because I cannot defend Bollywood. No A-lister actor came out to say, give us justice. And I cannot defend the indefendable. And she did. Hats off to her. Hats off to her body of work. But wasn't she the person who led Bombay police into saying, call Karan, call Aditya, he died because of nepotism? And they did that. They called everyone. Nothing happened. Then she said CBI came. Then she kept quiet. When CBI and enforcement and drugs said it's a drug angle, suddenly she gave another interview saying, yes, drugs kill Sushant. Give me protection and I will expose the names. If you knew drugs kill Sushant, why Sir, did you what say is your nepotism point? Any question that you have for Kangana Ranaut, you know what isn't a problem? If somebody thinks, as of today, just a second, Akashdeep Sabir, I will tell you why this is a false equivalence. As of today, there are multiple FIRs against Kangana Ranaut for using language which was considered defamatory, for making false allegations, one even for sedition. There is a complaint saying that she has indulged in sedition. I say, okay, battle it out in court, but at least take it to court, sir. At least these people are using the law. Yes, you want to use the law to get back. Let's fight it out. Fight it out in court, fight it out with the police, but don't fight it out on the streets. That's the difference. जब आपने उखाड़ दिया, तो आप law को किनारे रख देते हैं. Then you say, law गया अलग, अब हमने उखाड़ दिया. Akashdeep, जो करना है करो. And mind you, this is, just a second, Rizwan Siddiqui, before you respond, mind you, this gloating comes even after the Bombay High Court said the action smacks of malafide. Instead, the Shiv Sena, instead of saying, oh, you know, we are doing a rethink, says, ukhad diya. Rizwan Siddiqui. High Court says, malafide, Samna says, ukhad diya. It does smack of vendetta. It does. Yeah, let me just speak. See, I'll tell you what. Since the process of law was not followed right from stage one, the Supreme Court orders which were there in the case which was filed against the Bombay Municipal Corporation itself, the Supreme Court Division Bench has laid down certain protocols which are required to be followed. The municipal department has not followed that.
procedure of laws not being followed. But what was more shocking was that I personally went to a house and I told the officers that I have filed a case in the court. The matter is sub judice. It's going to come up at 12:30. The gentleman just does not bother. He locks me out of the house and he continues the demolition. And at the time of pasting of notice, there are 100 people present there. 50 police personnel and 50 municipal department people during the time of Corona. They barricade the whole idea. What is this? So this cannot be a welcome ticket for politics. This cannot be. You cannot. Yeah. But Amit Malviya, I want to put to you the question. Basically, now it's being said, it's out in the open. You are tacitly backing Kangana Ranaut. The Shiv Sena is getting back at her. She is as much a political adversary for them. She is no longer a private citizen. Amit Malviya. I said that at the beginning. It's a political battle. Listen, Padmaja. Kangana Ranaut is a very well-known name in the Indian film industry. She's one of the actresses who has several hits to her credit as women-centric movies. She's somebody who's got 3 national awards. She's not run-of-the-mill actresses in the Bollywood. Now, if her life is under threat, and if the Chief Minister of the state where she comes from demands security, then it's incumbent on the central government to assess it and provide the adequate security. So you're saying she doesn't have your backing. This is not political for you. It is not. It is not, Padmaja. I'm being very, very clear about it. Not political. And in fact, Kangana has also said it. But the fact is that our decision to give her security was justified because when she landed at Mumbai airport, everybody saw how the Shiv Sena hoodlums had arrived at the airport to assault her. And if she didn't have the security that she has been given, she perhaps would have been pulled up by these men, and God only knows what could have happened. These are criminals in Shiv Sena. If a member of parliament of Shiv Sena openly threatens an actress of her repute, calls her name, questions her parentage, then seriously there is a problem. And Shiv Sena MP has been on record having said all those kind of things. He later clarified that he just meant she's being naughty. I don't know which school he went to that he thinks Haramkhor is equal to naughty, but I will leave it at that. Having said that, she deserves security, she deserves justice, and what the Shiv Sena has done is brazen. Ma'am, why are you engaging in whataboutery? Time and again, I have said this since it's my platform, there is no condoning what she has said. But if anything, she should be legally prosecuted for it, and there are FIRs against her. When there are FIRs against her, why this extrajudicial action? And as far as Mr. Sanjay Raut is concerned, and I made you listen to earlier where he said there is no connection between the BMC and Shiv Sena. I want you now to listen to the second part of what he casually slipped in. Listen to this. त्या विषयावर चर्चा करणं आता बंद केलेलं आहे आणि काय चर्चा करायची तर झालं संपलं. पण आता कंगना राणावत हा विषय संपला आहे की पुन्हा कायदेशीर कारवाई किंवा काय? नाही संपला. आम्ही ते विसरूनही गेलो. आता आम्ही आमचं रोजच्या दैनंदिन राजकीय सामाजिक शासकीय कामाला लागलो. अजून काय पाहिजे? पण कंगना राणावत रोज ट्विट करतात. आजही त्यांचे दिवसभरात अनेक ट्विट आले आहेत. शिवसेनेवर मुख्यमंत्र्यांवर टीका सुरूच आहे. आम्ही काय पाहिलं नाही, आम्ही काय वाचत नाही, आम्ही सामना वाचतो. सो संजय गुप्ता जी बहुत कैजुअली संजय राउत जी बोल रहे हैं, फॉर माई रिस्पॉन्स सामना पढ़ते हैं हम, सामना. और क्या लिखा है सामना में? इससे ज्यादा सटल मैसेज क्या हो सकता है संजय गुप्ता जी? ये आज कंगना के लिए मैसेज है. कल अगर आपका पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं अच्छा लगेगा कुछ लोगों को टीवी पे, हो सकता है कल आपके लिए भी हो. आप तो बायस्ड है एक तरह से, आप तो एक तरह से बायस्ड है. आप सिर्फ वो चीजें बता रही हैं जो शिवसेना की तरफ से कही गई या सामना में छपी. आप वो चीजें तो बता ही नहीं रही जो कंगना ने कही. मतलब ये किस तरह की डिबेट है आपकी? आप मतलब उन चीजों में तो बताइए कि आप पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हैं यहाँ पे या मीडिया एनालिसिस के लिए हैं? आप एक तरफ, अब आप यहाँ पे मेरी एनालिसिस शुरू कर रहे हैं. आप पॉलिटिक्स को एनालाइज कीजिए ना. भी करेंगे हम. आप मेरे शो को क्यों एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं? वो आप मेरी चिंता मत कीजिए. जो देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है कि कौन क्या है. आप अपनी बात कहिए ना. वहां पर लोग घर घर गिरा रहे हैं, अगले दिन पेपर में छाप रहे हैं. आपको मेरी चिंता हो रही है. मेरी चिंता मैं खुद कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए. एक तरफा बातें कैसे करेंगे आप?
आपकी चिंता नहीं है मुझको, मेरे को इस देश की सर चिंता अगर है मैं कि बायस्ड मेरे होती देश के ना, अंदर ऐसे-ऐसे पत्रकार अगर मैं भी हैं बायस्ड जो एक होती तरफा बातें करते तो हैं, यहाँ दूसरी पे दिखाते ही नहीं है। 2 वर्सेस ये 4 का पत्रकारिता पैनल की नहीं दुनिया के लिए रखती। यहाँ सबसे पर गलत चीज़ है ये। बीएमसी और आज शिवसेना देश को के अंदर डिफेंड जनता करने जो के है, लिए इस 4 बात को लोग बैठे सोचती है कि क्या हो गया और हमारे मीडिया कंगना को। ये को मीडिया डिफेंड की करने के लिए ये रिजवान सिद्दीकी हैं और अमित टाइप है मालवीय आपका, बीजेपी को मतलब डिफेंड बात करने के करने का, देश को दिखाने लिए। का, तो मेरे को एक तरफा भाषण मत दिखाते दीजिए हैं। प्लीज, आप शर्म अपनी आनी चाहिए बात आपको। बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप आपकी मेरे शर्म पत्रकारिता की को चिंता मत कि आप कीजिए, एक तरफा शर्म चीज़ उन दिखाते लोगों को हैं। आनी चाहिए जो बताइए। स्टेट मशीनरी का नहीं, इस्तेमाल करते आप इस देश हैं को सिटीजन्स को दिखाने डराने और धमकाने आप के एक लिए, तरफा बात कर रही है। और अगले दिन पेपर में छापते हैं कि जिसने टीवी पे ना देखा हो वो सामना में पढ़ ले कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा। दैट्स द पॉइंट। जब आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ना हो ना तो मेरे को भाषण मत दीजिए। मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, आपका जवाब सुनने के लिए बैठी हूँ। जवाब है तो जवाब दीजिए, भाषण मत दीजिए। वो संजय राउत देते हैं, आपकी तरह की पत्रकार वो संजय राउत जी देते हैं, आप भाषण मत दीजिए, आपका टाइम बाद में आएगा। चलिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है क्लियरली, आप सिर्फ भाषण देने के लिए। बताइए विक्रम यादव जी, आपके पास कोई जवाब है या आप भी थोड़ा 5 मिनट का भाषण प्रिपेयर करके पद्मा जी, लाएं? बताइए विक्रम पद्मा जी। जी, हाँ पद्मा जी, कोई आदमी गलत काम करता है तो मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, मैंने कह दिया कि गलत काम जो भी कर रहे हैं, अवैध निर्माण जो भी कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होती है। किसी पे जल्दी हो जाती है, किसी पे थोड़ा लेट होता है। चलिए, यही इसका है। आप इस चीज में क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ये तो सारी मैं सपोर्ट कर रही हूँ। एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कभी भी मुझे सुना होगा, मैं इसी शो में 10 बार बोल चुकी हूँ, जो इलीगैलिटी करे आप उसको तोड़ दो, बट कम से कम रूल्स तो फॉलो कीजिए। और क्योंकि आप कितने विचार के धनी हैं यादव जी, तो कल किसी शो में जाएंगे ना तो ये 2 नोटिस की भी बात कीजिएगा जो कि 2 साल से शिवसेना की शाखा को गई हुई हैं और अभी तक उसे किसी ने इन शाखाओं को नहीं उखाड़ दिया। ये बात याद रखिएगा 24 घंटे बाद, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। ये वाला आर्ग्यूमेंट कल की डिबेट में इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक द फैक्ट्स आर आउट देयर. The language can easily be decoded irrespective of what people think about media ethics. The language is quite clear, the indication is quite clear, and the messaging is quite clear. People who are watching are smart enough. Thanks very much, all gentlemen. Tanvi Pruthi for having joined me on debate number 1.